नमस्कार। हेल्थ फॉर ऑल में आप सबका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मंकी पॉक्स पर। अंग्रेजी में एक कहावत है, एडवर्सिटी डज नॉट कम अलोन। अभी हम कोविड-19 से पूरी तरह निपट ही नहीं पाए थे कि मंकी पॉक्स नामक बीमारी ने दस्तक दे दी है। WHO ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर ये बता दिया है कि इसे हल्के में ना लें। We kickstart this session with yoga, an episode of yoga on different forms of pranayama. So today we are going to talk about a very important topic and that is pranayama. हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज के बारे में बात करने वाले हैं और वो है प्राणायामा। प्राणायामा एक बहुत ही एंशिएंट योगिक प्रैक्टिस है. It's not that it has just come now and it's the happening thing. No, nothing like that. It is basically from the time, maybe India civilization had come, and from that time onwards, actually pranayama has come. What do we mean by pranayama? Prana, what does prana mean? Prana means life. Yama, that means controlling it or keeping it in our control. Okay, that is yama. So pranayama is basically keeping your life force in your own control. Like people say that गुस्सा आ जाता है यार, मतलब कंट्रोल में नहीं होता, या फिर नहीं आती है यार नींद, कंट्रोल में नहीं होता, मतलब सोने की कोशिश करते पर कंट्रोल में नहीं होता. It has to do a lot with basically the way you are breathing or how consciously you are breathing. जब मैं बोलती हूँ कि conscious breathing, इसका मतलब कि आपके लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है ब्रीदिंग, राइट? आप 1 घंटे पानी नहीं पिएंगे तो आप जिंदा रहेंगे. आप 1 घंटे खाना नहीं खाएंगे, आप जिंदा रहेंगे. आप अगर बाहर घूमने 40 दिन ना भी गए लॉकडाउन में तो भी जिंदा रहे, है ना? पर अगर मैं आपको बोलूं कि 5 मिनट आप सांस मत लीजिए तो क्या आप जिंदा रहेंगे? नहीं. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारी लाइफ की है वो है ब्रीदिंग, द वे वी ब्रीथ. ओके, ये बात अलग है कि हम में से बहुत कम लोग उस चीज पे अटेंशन देते हैं. ओके, पर उस चीज पे अटेंशन देने को प्राणायामा बोलते हैं. Now, इससे होता क्या है? When we inhale, जब हम सांस को अंदर लेते हैं, what does happen? The diaphragm, which is basically a curvature. Can you see? Our diaphragm is basically a curvature. ऐसे convex shaped में होता है. जब हम inhale करते हैं, now let me inhale. अभी क्या है? ये flat हो जाता है. हमारा thoracic cavity expand हो जाता है, right? We inhale, the diaphragm becomes thoracic cavity becomes more, lot of air inside our body. Now when we exhale, what happens? The carbon dioxide goes out. That means lot of toxins get released by pranayama. We always talk about toxins getting released from our body, doing things, practices for toxin getting released from our body. But you need to know that your toxins from your body, 60% of the toxins from your body can be actually released through your breath. And that can be done by a conscious breathing or pranayama. The next session is an important session on monkeypox diagnosis, myths, prevention, treatment and management. डॉक्टर साहब, देश के कुछ एपिडेमियोलॉजिस्ट का कहना है कि मंकी पॉक्स कोई नई बीमारी नहीं है. ये एक एन ओल्ड डिजीज विथ न्यू कोट, फ्रेश कोट. हल्ला तभी मचता है जब किसी डेवलप कंट्री के बैकयार्ड में ये पहुंच जाता है और तभी WHO पैनिक बटन दबा देता है. आपको क्या लगता है कि WHO ने जो ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है वो एक गलत फैसला था, वो जल्दीबाजी में लिया गया फैसला था, या किसी डेवलप्ड कंट्री के दबाव में लिया गया फैसला था? ऐसा नहीं है कि उन्होंने जल्दबाजी में लिया ये फैसला.
क्योंकि मंकी पॉक्स तो बहुत सालों से था, अफ्रीका के जंगलों में, कॉन्गो बेसिन में बहुत जगह इसके केसेस पाए जाते थे, बट नॉर्मली ये जो था ये बड़े बड़े शहरों में नहीं आता था। तो ऑफ लेट जैसे अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर ही बहुत ज्यादा केसेस हो गए, बड़े बड़े शहरों के अंदर फैलने लगा। तो इन लोगों ने एक लेसन भी लिया पीछे कोविड से, बिकॉज कोविड भी जब आया था हम लोगों को इतना नहीं मालूम था कितना बड़ा एपिडेमिक होने वाला है। तो टू बी ऑन अ सेफर प्रोफाइल एंड सेफ्टी, उसके लिए WHO हैज स्टेप्ड इन, और उन्होंने काफी हद तक काफी प्रिकॉशंस भी दिए हैं, लोगों की जागरूकता, आप जैसे इस पे हम बैठे हैं तो लोगों को बताने के लिए बैठे हैं कि इसको लाइटली नहीं लेना, बिकॉज पीछे वी हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम कोविड एपिडेमिक, सो वी हैव टू टेक एवरीथिंग सीरियसली, स्पेशली जब इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी इतनी तेज है, तो वी हैव टू बी ओवर केयरफुल, ओवर कॉशियस। You have in your recently extensively handled COVID patients. If a monkeypox patient comes to a hospital, I have asked this question before to others also, what are the precautions that a doctor and the paramedical staff should take? The monkeypox patient, if comes in the hospital, they will be, all patients will be kept in some isolation wards. So that does not require very much air handling changes. Because in COVID we used to have we ideally should have a negative pressure isolation rooms, but that was not feasible in such a large outbreak. So in monkeypox, not very special preparations are required for maintaining wards. Yes, isolation with separate washrooms are required, and healthcare staff and all doctors needs to follow all the similar precautions. They should have wear gloves, and they should have all coverage around their body, because since it is transmissible through body fluids also, so any sweat in the patient's body, or if the lesions are there, or any pustule boil, if there is any rupture from the lesions, so all these infected material can easily transmit virus to healthcare staff also. So they need to wear mask, and they need to wear all protective gear. And we can say that by this time, as if we see today's scenario, we have lot of PPEs and kits available in our country because of the COVID. So that will not be a issue this time. The kits or the PPE precautions is definitely available at this time in our country. So these are the all basic precautions that healthcare staff has to take it. कई देशों में ये पाया गया है कि मंकीपॉक्स से जो मौत हुई है वे दरअसल एन्सेफ्लाइटिस से जुड़ा मामला है। क्या संबंध है दोनों? फीवर, चिल्स के साथ में बॉडी एक होना, लिम्फ नोड एनलार्जमेंट, रैशेस, ये कॉमन सिम्टम्स हैं। बट अगर ये सीवियर हो जाता है, इट कैन अफेक्ट एनी ऑर्गन, एंड मोस्ट कॉमनली जो अभी डेथ हुई, इनफैक्ट इंडिया में भी जो डेथ हुई है वो एनकेफेलाइटिस की वजह से हुई है। सो दिस इज अ सीवियर एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ मंकीपॉक्स। Most diseases are mild diseases or moderate diseases. बहुत कम लोगों में ये सीवियरिटी, सीवियर इलनेस हो सकता है, और जिन लोगों में होता है उन लोगों में बेसिकली ये रिस्क फैक्टर्स, जैसे कि अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स है, बहुत एल्डरली पेशेंट्स है, प्रेग्नेंट वुमेन है, चिल्ड्रन बहुत जो है, इन लोगों में कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो फिर इस ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में हमें ज्यादा एहतियात बरतनी चाहिए। जैसे कि हमने कोविड-19 में भी देखा कि कुछ ग्रुप होते हैं जिसमें कि चांसेस इन्फेक्शन के सीवियर होने के ज्यादा होते हैं। तो इसी तरह से मंकी पॉक्स में भी देयर इज अ ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हु आर एट अ हायर रिस्क फॉर सीवियर डिजीज। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स अ माइल्ड इलनेस। एंड अगेन थोड़ा सा डिफरेंस है कोविड-19 में, बिकॉज कोविड-19 usually, as we know, droplet, या फिर sometimes there is also a airborne transmission, close gathering, जैसे कि डॉक्टर रामनजीत ने बोला। लेकिन monkeypox में usually it's by very close contact, sexual transmission is possible, and a lot of cases have happened in men who are, like in MSM patients. So एयरबोर्न ट्रांसमिशन इतना कॉमन नहीं है, बट अगर मान लीजिए पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिटेड है और कोई एयरबोर्न एरोसॉल जनरेटिंग प्रोसीजर जैसे कि कोई ब्रोंकोस्कोपी या कुछ किया जा रहा है, तो उस समय एरोसॉल ज्यादा जनरेट हो सकते हैं, जिससे कि वो ट्रांसमिशन ज्यादा हो सकता है। अदरवाइज
close contact. Usually अगर आप 6 feet के distance में हैं more than 3 hours, then chances of transmission becomes a little higher. इसके लिए मतलब ये बस ये एंड दूसरा एक और चीज है इसमें कि इन्फेक्शन जो है सिम्टोमेटिक पेशेंट से होता है, अनलाइक कोविड-19 जिसमें कि एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स भी ट्रांसमिट कर सकते थे इन्फेक्शन, या फिर इन्फेक्शन बिफोर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स ट्रांसमिट होता था. सो मंकी पॉक्स में यूजुअली ट्रांसमिशन को सिम्टम्स के ऑनसेट के बाद स्टार्ट होता है. तो फिर थोड़ा सा सबको अगर मान लीजिए फीवर आ रहा है तो अगर एहतियात बरतेंगे, आइसोलेट रहेंगे, तो फिर इसके उतने ट्रांसमिशन के चांसेस नहीं होंगे जितना कि कोविड-19 में था. You of course narrated how you first found the patient and how you treated him. But let me ask a question. Is there a protocol set in to treat monkeypox patients? Monkeypox as such doesn't require a specific treatment. It needs a symptomatic treatment depending on what symptoms you are getting, right? If you are getting fever, then fever needs to be treated with antipyretics and NSAIDs. If you're getting skin infections, then primary aim is to prevent secondary infection, secondary bacterial infection. So you give antibiotics and keep the skin lesions clean, give topical antibiotics, then so that it doesn't get secondarily infected. The lesions does not penetrate the deeper layers of skin and do not cause scarring. If there is complications, the patient leads to complication, then it is treated accordingly. So there is no set protocol that every patient needs to be treated on this same line. It has to be individualized. I was not actually speaking about treatment protocols. I was speaking about isolation and other things. Like, when you find a patient, how long does the isolation last? What are the protocols to be taken? For example, one of the patients in Kerala, he played football with the other people and the entire team was actually isolated. So what is the protocol regarding isolation? Presently, the protocol is isolation. If you have symptoms for 21 days, you have to be isolated. Your family members or your primary close contacts have to be isolated and have to be under active surveillance. That you have to be closely monitored for any active symptoms. The good thing about monkeypox is that, unlike as Dr. Neha said, that it is not transmissible unless you have the symptoms. So that is a good thing, that if you have symptoms, you isolate yourself. Symptoms even means you having fever or sore throat or a myalgia, that also counts in the symptoms, and you have to isolate yourself, inform the authorities so that the sample collection can be done. Presently, home isolation, I don't think in Delhi it's allowed. Home isolation is not allowed for the symptomatic person. He has to be admitted, and presently the centers I know is LNJP and G2P. There the sample collection is done. For the contacts, the home isolation is allowed unless they get the symptoms. Dr. Ramanjit, you just mentioned that this virus was known in Africa, especially it was quite well known, and it gained prominence only when it came to the Western world. Well, now we have deforestation taking place, so the bats have started coming home. We have pigsties at home. We have cows staying in the bedroom. Then we have rats all around. We have swine flu. So a lot of these zoonotic diseases are on the rise. So what is your viewpoint on this? Because the contact between humans and animals, the dividing line is becoming thinner and thinner and often quite gray. Definitely, we have rodents, we have other, zoonotic animals coming, but you see, only if it is infected, then we tend to have more of, we have the tendency of catching this sort of a viral infection. But definitely, these days, living in a good society, people who are not very well socioeconomically well off, there are definitely chances. But unless there's much of infection, because with monkeypox, normally it cannot spread without having a transmissible route. So if there is transmission, certainly we have to take care of that.